अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कंप्यूटर 9th क्लास का गैस एग्जामिनेशन 221 के लिए, जो कि तमाम पंजाब बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगा और ALP सिलेबस के मुताबिक होगा, शेयर करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर का पेपर टोटल 50 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स के MCQs होते हैं, 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने MCQs की प्रिपरेशन के लिए एक्सरसाइज के एंड पर दिए गए ऑब्जेक्टिव एंड MCQs को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। आपके इंशाल्लाह MCQs के जो 10 मार्क्स हैं वो वहीं से आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ये नीचे दिया गया गैस बताने जा रहा हूँ। आप शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इस गैस की प्रिपरेशन कर लें। इंशाल्लाह आपका टोटल 50 मार्क्स का जो पेपर है वो इसी में से आएगा। स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाजिद और आप देख रहे हैं एंटायर इन्फो। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 पे आते हैं। यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं: राइट डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट पर्पस ऑफ सेट सिंबल इन द फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम, व्हाट इज मेंट बाय प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन, what is meant by output and input and requirements of flowchart, write the definition of algorithm. If there are so many solutions of a problem, how do you choose the best one? Write a way to check the flowchart requirements. Write 3 advantages of algorithm. Write 3 disadvantages of flowchart. Long होंगे: take a number from user as input and find out its factors. Write the symbols and its purpose, uses in formulation of algorithm. Unit 2 है: write the definition of number system, what is difference between volatile and non-volatile memory, what is meant by truth table, write procedure to converting from hexadecimal to binary numbers, what is meant by quotient and remainder, write difference between bit and byte, draw a truth table for NOT operator, what is meant by storage devices, write differences between temporary and permanent devices, write definition of truth values. Long question है: what is logical operator, and write a note on its different types. Convert this number to hexadecimal. Unit 3: what is meant by transmitter, what is meant by receiver, what is called port number, explain a router, what is called TCP/IP protocol, write the uses of SMTP protocol, define communication channel, describe working of web browser, how client and server communicate with each other, what is difference between static and dynamic IP. Long है: write a note on IP addressing. दूसरा long है: what is TCP/IP, describe its 5 layers with their functions. Unit 4: name 5 issues related to data security. What is counterfeit and hard disk loading? Write abbreviation of CCTV. What is transaction fraud? Give a reason to add CAPTCHA on website. Who is called hacker? What is meant by encryption? What is soft distinct? Write 5 features of a good password. What is patent and why do we need to register it? Long है: write a detailed note on cyber crime, describe ethical issues related to security briefly. Unit 5 short question: what is meant by anchor, what is hyperlink, which tag is used to write a paragraph, write the definition of markup language, write features of HTML tags, what are singular tags, write difference between header and body, describe basic text formatting tags, differentiate between order and unordered list, what is hypertext, write down the steps of creating and expressing first web page, write a short note on text formatting. ये आपके यूनिट 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लीजिएगा। इनमें से कुछ रिपीटेड भी आ सकते हैं।
if there are so many solutions of a problem, how do you choose the best? یہ repeated ہے. Write importance of flow chart and problem solving. What is meant by planning of solution? Write definition of flow chart. Write importance of flow chart and problem solving. Write 3 disadvantages of flow chart. Write definition of truth values. Draw truth table for NOT operator. Write definition of number system. Write difference between temporary and permanent devices. Write difference between bit and byte. What is difference between static and dynamic IP? Describe the working of web server. What is called TCP/IP protocol? What is called port number? How client and server communicate with each other? What is meant by transmitter? Long hair, write the symbol and its purpose used in formulation of algorithm. What is logical operator and write a note on its different types. What is TCP/IP? Describe 5 layers with their functions. تو اسٹوڈینٹس یہ تھا آپ کا کمپیوٹر سائنس کا گیس. اسٹوڈینٹس مجھے یقین ہے کہ اس گیس کو فالو کر کے آپ اپنے کمپیوٹر سائنس کلاس 9 فار ایگزامینیشن آف 221 کی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے. اسٹوڈینٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ساتھ دیا گیا بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.